तो आज हम चलो, तो सबसे पहले आता है हमारा शिव कल्याण शेट्टी। तो शिव, यस सर। पीरियोडिक मोशन। अच्छा रुको एक सेकेंड, सिंपल हार्मोनिक motion. Okay, this is the chapter's name. Now tell me, Shiv, what do you understand by periodic motion? Sir, continuous oscillation of like thing like string from one main position to another. Continuous oscillation बस होगा, टाइम पीरियड सर सेम। हाँ सर, वो जैसे स्विंग का हो गया, पेंडुलम का हो गया। हाँ, तो टू एंड फ्रो मोशन जो हुआ, टू एंड फ्रो हाँ मोशन जो हुआ, ये क्या हुआ? टू एंड फ्रो मोशन इज पीरियोडिक। ऑसिलेटरी मोशन, राइट? हाँ नाउ सर। पीरियोडिक मोशन क्या होगा? पीरियोडिक मोशन हो सकता है जैसे अर्थ का मोशन पीरियोडिक है, in every हाँ 365 सर। days it completes a year, right? So it's a periodic motion. Even pendulum's motion is also periodic. It happens in one time period, उसका एक टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन कवर करता है। ओके, बट periodic motions can be oscillatory motions. Periodic motions can be oscillatory motions, but all oscillatory motions cannot be periodic. Getting my point or not? यस। Periodic motions can be oscillatory. Your periodic motions, all periodic motions cannot be oscillatory also, right? But all oscillatory motions can be periodic. फिर से, all periodic motions cannot be oscillatory. For example, rotation, revolution of Earth around the Sun, or rotation of Earth about its own axis. It is not oscillatory motion. But all oscillatory motions can be periodic. Understood? चलो, यस सर। चलते हैं आगे। तो अब आती है बारी, देखो सुनो ध्यान से। Now, what is simple harmonic motion? What is simple harmonic motion? अच्छा, कोई कैमरा स्विच ऑफ नहीं करेगा प्लीज, और ऑल ऑफ यू विल आंसर वॉट एवर आई एम आस्किंग यू, ठीक है? Now, what is simple harmonic motion? So this is when the displacement of an object is when the displacement of an object is sinusoidal. Anybody who can help me understand what is this word sinusoidal? Function of time. When the displacement of an object is sinusoidal function of time, then we say that the motion is harmonic motion. Or simplest form of harmonic motion is called simple harmonic motion. अब साइनोसॉइडल का मतलब क्या होता है? सर, माय हाफ ईयरली पेपर इज नॉट विथ मी राइट नाउ सर, एंड आई इन फिजिक्स आई गॉट 70 out of 70 I got very good selection, very good, 55 marks are very good. So what I was asking was, what is a sinusoidal function? Anybody who can tell me this? हमारा So it's a form of curve, sine curve, or yes, sir. It's a form of sine curve, means um, it's a relating. cosine function. It's हाँ a form सर, of either sine or cosine function, right? फंक्शन, हाँ सर, वही बता रहे So this is what is sinusoidal functions. तो how is it given? तो अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है? तो साइन क्यूब भी हो सकता है, साइन 4 भी हो सकता है। ये दीज आर नॉट सिंपलेस्ट फॉर्म्स. Simplest form is if x is representing the displacement of the object, then it is given as a sine omega t plus delta. So what is x here? देखते जाओ सब ध्यान से, हाँ? I am recording this session or not? Yes, I am recording. X is
displacement of the particle from its mean position. What is x? X is displacement of the particle from its mean position. Okay. Now this is x. Now what is A? Amplitude. Yes, in junction diodes we draw graphs. Very good. What is A? A is the maximum displacement of the particle from its mean position. Okay, this is A, and it is called as amplitude. Now, what is omega? So omega is angular frequency. Okay, this is angular frequency. What is delta? This is phase constant. And what is T? T is, of course, time. Right. Now there is a special term for this thing. And this is what? This is called as phase or phase angle. This is called as phase or phase angle. Right. अब देखो यहाँ पे there is this term called as mean position. Right. So what is this mean position? तो आइए देखते हैं. Mean position is the position of the particle. Mean position is the position of the particle at which the net force or torque acting on it is 0. Understood? So what is mean position? It is the position of the particle at which the net force or torque acting on the particle is 0. Okay? Yes, sir. Yes, sir. ये सबको समझ में आया या नहीं आया? ये बताओ भाई जल्दी से. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी मैं समझाता हूं तुम्हें इसके आगे की कहानी की ये और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे. ठीक है? You will derive this equation, don't worry, this is time. ये हो गया तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. ठीक है? नाउ always remember that the force will always be acting, that the object will be oscillating about a fixed point. आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को लेते हो, राइट, और एक पेंडुलम को लेते हो, whenever you take a pendulum also and you release it by displacing it from its mean position, the pendulum will always oscillate about a fixed point. And where is the fixed point? From where it is hanging. Understood or not? Yes, जैसे sir. object है मान लो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे यहाँ रखो इसको, अरे इधर आओ. हाँ, तो ये क्या करेगा? अगर मैं इसको ऐसे ऑसिलेट करेगा तो किसके अबाउट ऑसिलेट करेगा? ये it is oscillating about this fixed point, right? So always remember that these objects will move about a fixed point. Okay? Now comes, so all of you are clear about all these
points, Yes. right? Yes, sir. Okay. Now comes the condition for simple harmonic motion. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? We are discussing linear SHM. We are discussing linear SHM. Okay. So in linear SHM, the conditions for linear SHM are the conditions for linear SHM are first condition is force F is equal to minus kx. Now this is force F vector and I am writing this x as x vector. Now what is x? Again, it is the displacement of the particle from its mean position. You are aware of it. Displacement of the particle from its mean position. ठीक है भाई? Okay, this is x. Now what is F? F is the restoring force. F is the restoring force, right? And what is K? K is the force constant. ये spring constant मत बोलना इसको, ठीक है ना? This is force constant. Okay. Now, what does this negative sign indicates? This negative sign indicates that the direction of force is opposite to the direction of the Displacement. displacement of the Yes. particle from its mean. Position. Okay. This is the importance of negative sign here. किसी को कुछ बोलना है, कुछ सुनना है, कुछ समझना है तो बोलो रे बच्चों फटाफट. अब बारी आती व्हाट इज दिस रीस्टोरिंग फोर्स? ये भी तो समझना पड़ेगा ना. व्हाट इज दिस रीस्टोरिंग फोर्स? तो चलो इसको लिखते हैं. अरे भाई आ जाओ. हाँ, इट्स अ फोर्स which tries to bring the particle. अरे वो तरनी वगैरह नहीं आए ना आज. अरे एक सेकंड रुको जरा. हेलो.
हम्म हाँ ये वाला था. It's a force which tries to bring the particle back to its original position. It's a force which tries to bring the particle back to its original position. ठीक है. So this is the explanation of F is equal to minus kx elements, right? Now this is the first condition. ये कौन सी condition है? This is the first condition. ठीक है. Now comes the second condition. मतलब ये होगा तो वो भी होगा, मतलब एक होगा तो दूसरा भी होगा, right? So the second condition through which you can check is A is equal to minus omega square x vector, right? I will not be rewriting this omega and x again, but yeah, what is A? A is Acceleration. acceleration of the particle. ठीक है. This is acceleration of the particle. Okay. Now, अब क्या करेंगे देखो. Now let's establish a relation between k omega and mass, right? So we have this f vector as what? Minus kx. But all of you are aware that it is also equal to mass into acceleration. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. we have acceleration A as minus k by m into x vector. Now compare this equation with this equation. ठीक है. क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? We are comparing it. Okay. Now what you will get here? क्या मिला यहां से? We get omega square as minus k by, omega square as k by m. Got it? So we have omega as root of k by m. Sir. Now, what is the expression for time period? Time period is 2 pi by omega, or it is 2 pi under root of m by k. This is the time period. What is k? T, it is the time period. बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बोलोगे फटाफट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shiv, all Yes, well? sir. Yes, sir. Now, what about frequency? Frequency is 1 by time period. This is f. Okay. And this will be 1 upon 2 pi under root of k by m. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से. किसी में कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी को? हेलो. No, sir. No, sir. नहीं चाहिए ना? Just go through it, all of you. If you want to ask anything, just ask, and then I'm giving you 1 minute time. Go through it quickly. Sir, can you please show the previous slide once? Thank you, sir.
Karini, Janvi, and every one of you who are actually having confusion regarding the links, right? I have already sent you the links, and the links remains the same for every session, right? Same matlab, there will be Physics Pro Gold sessions on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays, 9:30 to 10:30. So it's written in the description there, right? Physics Pro Gold link for 11th standard. Okay. Now there is this numerical solving session for 11th standard. उसमें भी वो लिखा हुआ है मैंने वहां पे. और 12th standard का भी link is already there with you. So please follow that link and join the session automatically. मुझे याद आता है तो I send it to you, but हाँ अगर मुझे याद नहीं आया कि भेजना है मुझे तो प्लीज आप लोग उन लिंक्स को फॉलो करके you can join the sessions, right? भूलिया ये खत्म. Sir, All of you done this part? Yes, sir, sir. am I audible, sir? हाँ बोलो. सर आप एक बार फेज एंगल बता सकते हैं? क्या रिपीट होता कर है? सकते? हाँ सर. फेज एंगल ओमेगा टी प्लस डेल्टा होता है. फेज का मतलब क्या होता है कि ये किस फेज में ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है. फेज में मतलब देयर विल बी डिफरेंट, वी विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस एंटायर सिंपल हार्मोनिक मोशन में सर्कुलर मोशन थी, राइट? तो वो सर्कुलर मोशन में किस एंगल पे वो है वो दिखाता है, दैट इज द फेज एंगल. एंड व्हाट इज फेज कांस्टेंट? इट इज द initial phase of the, it is the phase of the particle when it has just started, time t0 पे. Okay? यस सर, थैंक यू सर. उसको फेज कांस्टेंट को इपॉक भी बोलते हैं, इपो या इपॉक भी बोलते हैं. ठीक है. दिस इज EPOCH. ये उसको मालूम होगा, हमारा को पूछो. So let's derive this equation now. जो equation हमने देखा ना, A is equal to X is equal to A sin omega t plus delta, we will be deriving this equation now, right? So we are doing derivation of equation of SHM. It's a very important derivation. At least there is a very high probability that at least one question can be asked from this entire derivation, right? So derivation of equation of SHM. All of you, please pay attention. If you don't understand, please ask. I will be giving you time to write it. Okay, so don't waste your time. Now, a particle is performing simple harmonic motion. Okay, this is the line on which it is oscillating. Okay, so at time t is equal to 0, this line is representing time t is equal to 0, this line is representing time t is equal to t. So at time t is equal to 0, what is happening is, this is x is equal to 0, but the particle was at this location, that is x is equal to x naught. And this particle was moving with velocity v naught in the forward direction. ठीक है? I would like you to find what is the position of this particle at time t is equal to t. So we want to find what is x here and its velocity v at x is equal to x and t is equal to t. I hope all of you understood it. Yes or no? Yes, sir. So we have to write x as a function of time t. What do we want to find? We want to write x as a function of time t. Okay? And we also want to find what is the velocity v. It will be, of course, dx by dt. And we also want to write it as a function of x. Not x. हाँ, x. लिख सकते हैं. चलो, पहले तो तुम ये सीखो कि ये क्या करेंगे. x as a function of t. अगर x नहीं जाएगा तो we will be differentiating it with respect to time, we will get v, right? हाँ भाई, चले आगे. यस सर. चलो, we have the condition for SHM as A is equal to minus omega square x. Tarini and Janvi,
These were the two conditions for a particle performing SHM. So we are using this condition. A is minus omega square. Yes. Okay. A is what? A is rate of change of velocity is equal to minus omega square x. Now, what we do here is we multiply it by dx on either of the sides. Why we are doing so? Because there are three variables, v, t and x. We want to reduce this entire equation into two variable equation. That is why we are multiplying it by x on either of the sides. Now this dx by dt, this dx by dt can be written as v. So this is v dv is equal to minus omega square x dx. Now integrate it. x naught से लेके x तक, v naught से लेके v तक. When x is equal to x naught, v is equal to v naught, x is equal to x, v is equal to v. भवानी तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. देख इतनी हिंदी आने लगी ना तेरे को, थोड़ी देर में पूरी सीख जाएगी तू. So v dv is equal to minus omega square x dx. Now how many of you don't know integration? कौन है ऐसा जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता? जल्दी बताओ हाँ या ना. हाँ सर. किसको नहीं आता है? सर आता है वो बोल रहा. हाँ, बच गया तू. चलो, श्लेषा को आता है कि नहीं इंटीग्रेशन? आता है सर. हाँ हाँ, तुमको तो आएगा ही भाई. सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था. तू तो जेई मेंस वाली है ना. Now, when you integrate it, what you get here is v square by 2. This is v naught by v naught to v, and this is minus omega square x square by 2 x naught to x. 2 cancels out. Now substitute the limits here. Upper limit substitute करोगे तो you will get v square minus v naught square. Upper limit minus lower limit is equal to minus omega square. Again substitute upper limit. It's x square minus x naught square. Okay, right. So v square is equal to what? V square is equal to v naught square plus omega square x naught square minus omega square x square. I hope all of you understood this. Say yes or no. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now, what I'll do here is I'll be taking out omega square, and then under this bracket I'm writing x naught square plus v naught square upon omega square minus x square. This is v square. Right. Now, please pay attention and just don't deviate from this point. This term, I am writing this term as a square. Right? So I have v square as omega square times a square minus x square. This is v square. Okay? All of you. Now this, what was this A? This A was amplitude. Now why I have written this? I'll just let you know. Just wait. Few seconds. एक बात बताओ. Suppose this is a pendulum. Okay? Though this is not an example of linear SHM, but it will work here. Now, when this pendulum was pushed, was given some velocity here, what will happen to its velocity at the extreme point? What will be its velocity here? Jaldi bolo bhai. Suppose here the velocity was u. What will be its velocity here? It has reached its maximum. ये इस oscillation में जा रहा है.
So this was mean point and this was extreme point. What will be the velocity of this pendulum at extreme? Jaldi bolo. So maximum, sir. अबे extreme में बच्चे Decreases. पेंडुलम पेंडुलम नहीं देखा, Zero, sir. पेंडुलम नहीं देखा है? So zero, sir. हाँ तो हे देवी तुम मैक्सिमम क्यों बोल रही हो? बताओ ऐसे करोगे क्या? Sorry, sir. ऐसे नहीं करना बेटा, है ना? नहीं तो मतलब समझ रही हो, खुद ही आत्महत्या करना पड़ेगा, मुझे खिड़की से बाहर कूदना पड़ेगा। एक्सट्रीम पे मैक्सिमम वेलोसिटी तू बोलेगी तो। हियर द वेलोसिटी इज जीरो, राइट? नाउ टेल मी व्हाट वाज x? x was the displacement of particle from its mean position. So if I keep its value as a, the value of x as a, what will happen? A square minus a square will be zero. Yes or no? Hello. Yes, sir. So that's why I wrote that orange colored term as a square. Understood or not? Yes. ठीक है? Because the velocity at that point is equal to zero. So now remember that acceleration, amplitude A has another expression to represent it. Amplitude A is given as root of x naught square plus v naught square upon omega square. This is amplitude. Well, what is x naught? What is x naught? X naught is initial position of the particle. What is x naught? X naught is initial position of the particle. Okay? ये मेरे प्यारे बच्चों समझ आ रहा नहीं आ रहा? जल्दी बताओ भाई। हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. Initial position of the particle. What is V naught? V naught is initial velocity of the particle. Initial velocity का मतलब velocity at time t0. ठीक है भाई? Yes. Please remember, ये जो जितने boxes बना रहा हूँ ना, 12th standard students, all of you remember these formulas. 11th standard students practice this derivation. ठीक है? ये आते हैं सवाल इस पे। Yes. So now we have V as Sir, what? हाँ बोलो। why did you write that a square term as x naught square plus b naught square by? अरे अभी तो बताया मैंने, जब बोलता हूँ क्यों नहीं बताती हो तुम मुझे? Just now I explained it. I did not understand. अरे तो तुम पहले बोलो ना, मैं जब बोल रहा हूँ, see when I'm asking you भवानी कि you understood or not, at that point in time only you say ना, sir I didn't understand it. You're getting my point or not? I explained it, I drew the diagram, I have removed the diagram, now you are asking it why you have taken it. I have to draw it again, na then. I gave you, I at least asked you thrice. I just this time I didn't take your name. बेटा मैं तुम सबसे बोल रहा हूँ, प्लीज टाइम मत बर्बाद करो तुम्हारा और मेरा। मैं तुमसे पूछता हूँ ना हर स्टेप के बाद कि समझ आया या नहीं आया, तो तुमको वही बोलना है। तुमको ना, तुम सब सुनो, मेरे बारात में नहीं आए पहली बार। When I am asking you whether you have understood it or not, please tell me then and there only कि सर हमको नहीं समझ में आया। Okay, sir. हाँ अच्छा, अब सुन ले, अब तू पूछा है तूने तो डांट तो दिया मैंने तुझे, अब सुन, डांटा नहीं समझाया है, डांटू मत रोएगी। सुन इधर, देख बेटा, v square is omega square and some constant is there, right Bhavani? This is some constant, yes or no? Yes, sir. Minus x square, right? Mm. Now what will happen to the velocity when it is at extreme point, that is at amplitude? बोलो।
Yes, sir. Yes. अरे यस सर क्या बोलो, व्हाट विल बी द At वेलोसिटी? extreme position, velocity is 0. यस, Now टू understood, sir. जीरो। Got रुको it, got. रुक अभी, रुक अब तो, अब पूरा सिखाऊंगा तेरे को मैं। तो दिस विल बी जीरो नाउ, नाउ इट इज कांस्टेंट बिकम्स व्हाट? सो x was what? X was what? A, A. because we are seeking it at amplitude only, na? So what Yes, is this sir. constant now? Constant is a square. Got it? A square. Now what was that Yes, sir. constant? This was the constant. Okay, okay. Thank you, sir. You are most welcome. पर बाद में नहीं, then and there only. Okay. So now we have this v as root omega root of a square minus x square. Okay, all of you. Now what will be this dv? Now we want to find x as a function of time t. Remember this one? So what we can do here is, now, if your kinematics is strong, you can easily figure it out, that you can write v as dx by dt, and this is omega root of a square minus x square. Okay. Now segregate the variables here. You get dx, I'll write it here only. Dx upon omega, omega nahi. Dx upon root of a square minus x square is equal to omega dt. Got it? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. What Yes. is dx by dt? Understood or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया. So dx upon under root of a square by a square is equal to omega dt. Now you integrate this. This is dx upon root of a square minus x square. Integrate omega dt. Integrate t0. What is x? X is x naught. T, what is x? X is x. I hope all of you understood it. Putting the limits, you understood or not? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now I have this integration dx upon root of a square minus x square. यही था ना? See, I am not doing. You want me to do the derivation of it? चलो करो देखो. See, x is equal to a sin theta. This is integration by substitution. So x is equal to a sin theta. So what does this dx becomes then? Dx by d theta is a cos theta, right? Or you write this theta d theta as here. It becomes a cos theta d theta. So now dx becomes a cos theta d theta divided by root of a square minus a square sin square theta. So this is a cos theta d theta upon a cos theta. That's it. Cos theta cancels out. You know this, how this became a cos theta? Yes or no? All of you understood it? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. भवानी जी, आपको समझ में आया है कि नहीं? Yes, sir. बहुत बढ़िया. तो ये कैंसिल हो गया. इंटीग्रल ऑफ डी थीटा इज, कौन बता रहा है इंटीग्रल ऑफ डी थीटा? शिव कल्याण शेट्टी, जल्दी से बताओ डी थीटा का इंटीग्रल क्या होता है बेटा? Sir, D. ऐसे मत बोले यार शिव, प्लीज यार. सच में बाई गॉड बता रहा हूँ, इतना तुम बाई गॉड मेरी जगह आके सोचो. ऐसे पता है, ऐसे ऐसे चाकू लेके ना, तो ऐसे मुझे कई बार मार दिया, ऐसे खच 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 खच. अबे शिव, तेरे को तू मतलब क्या करता है यार? भैया थीटा पावर 0 into d theta. Anything raised to the power 0 is what? 1. What is integration of theta power n? Theta power n plus 1 upon n plus 1 Yes, sir. plus constant c. So this becomes theta plus constant c. This is an arbitrary constant. Yes, sir. D of गधा, सुन लो बे सब लोग. D of गधा is गधा plus गधे की पूंछ का बाल, which is c, is arbitrary constant. Understood? Yes, sir. गधे को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया तूने, अब सबको जोड़ेगा तो गधा बनेगा, उसमें एक उसका बाल एक्स्ट्रा है. सुन रहा है मेरी बात? हाँ, sir. अब गड़बड़ नहीं करने का है.
सर आप 2 मिनट के लिए प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं। अभी नहीं जाएंगे, हाँ, रुको, सर। पहले इसको लिखने दो मुझे, तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया है, तो इसको खत्म तो करूंगा ना। दिस इज थीटा, राइट? कांस्टेंट सी होगा, उसको हटा दो, आर्बिट्री कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज थीटा फ्रॉम हियर? ऑल ऑफ यू चेक दिस। sin theta is x by a. So what is theta? It's sine inverse of x over a. So substitute it here. It's sine inverse of x over a plus constant c, right? So this is what? This is sine inverse of x over a. X naught to x is equal to omega t. Now substitute the values here. Sine inverse of x by a minus sine inverse of x naught by a is equal to omega t, right? This is a constant. This is a constant. Yes or no, all of you? यस सर। Yes. So now write this constant as delta. So we have sine inverse of x over a is equal to omega t plus delta. From here we get x as a sine omega t plus delta. मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुमको ये समझ में आया है या नहीं आया? जल्दी बोलो भाई। यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा को लिख लो यहाँ पे, है ना, याद रहेगा तुम। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज साइन इनवर्स ऑफ द इनिशियल पोजिशन अपॉन द एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? दिस इज द एम्पलीट्यूड। ठीक, सुनो अब मेरी बात, कुछ और नहीं पढ़ेंगे, पहले इसको तुम 2 बार एक एक स्टेप को पढ़ो। तरिणी समझ आया बेटा? तरिणी एंड जानवी? Yes, sir. Okay, good. Now, see, why I'm asking you is because at least one question is asked. There is a very high probability that at least one question is asked from equations only, right? That is why I'm asking you to just go through it once, twice, and then if you have any doubts, please clarify your doubts here only. ठीक है? बाद में I will not be entertaining any of your doubts. किसी का भी तो रहा होता हूँ, फोन करके पूछते हो कि सर ये डाउट बता दो। यहाँ बैठा हूँ, पूछो जो पूछना है, करो जल्दी से। You have 5 minutes. Read it. If you do it before that, very good.
Once you are done, please type done in the comment window. हाँ भाई, डन। Yes, sir. Yes, sir. चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। Anybody having any doubts here? No, sir. Very One good. second, can you go to the other slide? This one? No, sir. I don't know where you've written. Yes, sir, this one. तुम सोचो, मुझे पता चल जाएगा। Yes. Sir. ठीक है. हाँ, sir. सो चलो, इसमें ना मैं तुम्हें कुछ नई चीजें सिखाता हूँ, सुनो ध्यान से। So we have this x as what? X is equal to a sine omega t plus sine inverse of x naught upon a, right? Now, delta is how much? Delta is sine inverse of x naught over a, right? Yes. Now, if the object starts from x naught is equal to 0, मतलब initially the object is at its mean position, right? कहाँ से चालू हो रहा है object? It is at its mean position. Okay. Now, what will be delta then? Hello? Then delta will be sine inverse of 0. So that is Yes, 0. Yes. You will take delta as the minimum value, right? So sine inverse of 0 is 0. So what is x becomes a sine omega t. So whenever the particle starts oscillating from its mean position, its equation will be x is equal to a sine omega t. Understood or not? Yes, sir. yes, sir. And whenever you will be observing the particle from mean position, मतलब with respect to mean position, whenever you will be observing the particle with respect to mean position, the expression for the particle will be, or displacement will be a sine omega t plus delta. तो आप कौन सा इक्वेशन कब यूज करना है? दिस इक्वेशन यू विल बी यूजिंग, देखो ध्यान रखना ये, ठीक है ना? ऑल ऑफ यू प्लीज रिमेंबर इट।
This is the most important part of our discussion. This is what? This is, use this equation, use it when you are taking mean position as the reference point. तभी साइन का फंक्शन आएगा. Got it, all of you? And use this equation. Use it when the particle starts oscillating from the mean position. Because there is a difference between these two. There is a difference between these two. In the first case, the particle is starting from mean position itself, right? In the second case, we have taken it as reference, right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes. now see the second condition. If this is the first one, right? Second one. If x naught is equal to a, then what will be delta? It will be sine inverse of a by a. So this is sine inverse of 1. So this is pi by 2. What is sine inverse of 1? Pi by 2. By 2. So what does this x becomes? What does this x becomes? X is now a, अरे कहाँ चला गया? हाँ. X is now a sine omega t plus pi by 2. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है a cos omega t. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So Yes, sir. you will use this equation. You will use this equation. कब use करोगे? When the particle starts oscillating from the extreme. Understood or not? Yes, sir. Yes, sir. See. When the particle starts oscillating from the extreme. Now, if you write x as a cos omega t plus delta, अब क्या करोगे? Now use this. When will you use this? You will use this when the reference when you are taking the extreme position as a reference. मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब हवा हवाई हो रहा है? हाँ सर, आ रहा आ है. रहा है हाँ, सर, सर. समझ में। Yes, sir. दो बार पढ़ लो इसको. अगर कोई डाउट है, कहीं कुछ दिल में कुछ तुम्हारे रह जाए तो पूछ लो मुझसे. भवानी जी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Understood. बाद में नहीं पूछना, बता रहा हूँ. आज पूछ ले जो पूछना है अभी. Done. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Sir.
कुछ पूछना है? सर हम जब ऑसिलेट करते हैं तो हाँ। एक्सट्रीम पोजीशन से ही तो हम पार्टिकल पार्टिकल श्रेयसी, तू थोड़ी हाँ, करेगी बेटा ऑसिलेट, पार्टिकल करेगा ना। नहीं सर मतलब हाँ पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन से ही तो करता है ना सर। अच्छा वाह, अगर बीच में रहेगा तो हाँ यहाँ पे एक जोर से उसको धक्का दे दिया तो कहाँ से ऑसिलेट कर रहा है? हाँ तो मीन से ही करेगा सर। है कि नहीं, पॉइंट है कि नहीं? तो हाँ कहाँ सर पे फिर उसको देखो, एक्सट्रीम में उसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है और मीन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम होता है सर। होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा सर। हाँ। सबको समझ आया या नहीं आया ये? हाँ सर। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो, नींद आ रही क्या? थोड़ी देर और पढ़ा दूं? हाँ सर। तो मुझे भूख लग रही पर कोई बात नहीं, तुम लोगों ने डिनर कर लिया है? हाँ। नहीं बहुत सर। नहीं किया है? भूख लग रही क्या? न- नहीं 6 सर कर दिया तूने? आदत हो गया सर। प्रॉब्लम। हेलो सर। कर लिया तूने डिनर? हाँ। कौन कौन डिनर नहीं किया है? हमारा डन। हाँ सर। भवानी, यू हैड योर डिनर? Yes, sir. बहुत सारे बच्चे भूखा नहीं रख सकते ना। तरणी, तरणी, लक्षित, जानवी, शीरजा, श्रृंखला, Yes, sir. I'm. Yes, sir. Had sir. यू हैड योर Yes. डिनर? You चलो, had sir. नहीं नहीं मैंने नहीं किया अभी। तो श्रेयसी, Haven't sir. मैं वैसे बेटा भूखे दे लेंगे थोड़ी देर और। हाँ सर नो प्रॉब्लम सर। चलो 5-10 मिनट और हैं। हाँ सर। मैं आज तुम लोग को एक और चीज पढ़ा देता हूँ, देखो इसी में फिर मजा आएगा ना करने में। देखो इधर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्टिकल undergoing SHM in uniform circular motion। ठीक है भाई? यार ये कैसे हटता है, ये क्यों बेवजह आ गया यहाँ बीच में? लिखा हुआ देवेंद्र, आई डोंट लाइक इट। हाँ, देखो बच्चों ध्यान से, दिस इज अ सर्कुलर पाथ, these are x and y axis, this is y axis and this is x axis। ठीक है, ये थोड़ा ढंग का सर्कल नहीं बना है, अब बनेगा सा लगता है मुझे। ठीक है, जैसा भी है। अब देखो, what happened was a particle started from this location। ठीक है, this is particle P and it started moving with a constant angular velocity omega in this circular path, right? Now tell me, at time t0, this is at time t is equal to 0, right? The projection of this particle on this axis will be what? This point only, yes or no? The projection of this particle, the shadow of this particle on x-axis will be this blue color dot, yes or no? At time यस t0. सर। Yes, sir. Yes, sir. And on this y-axis, the shadow will be this one, yes or no? On the हाँ y-axis, सर। in t0, the projection of this particle on y-axis will be this one, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, when this particle reaches this point, say this point,
What will be its projection on x-axis? This will be its projection on x-axis. How will you find that? Just drop a perpendicular from this point on x-axis. You got this? Sir. And what will Yes. be its projection Yes, on y-axis? Its projection on y-axis will be this one. right, sir. ठीक है भाई? Now all of you can see here that the shadow on the x-axis is moving along this direction. And the shadow on the y-axis is moving along this direction. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now, at Yes, this sir. instant, Yes, sir. at this instant, if I draw this, the radius of this is A, this angle is theta, and this theta is what? Omega into T. This is location of this particle at any time T is equal to T, right? What will be its projection on x-axis? What will be the component of this vector on x-axis? It will be A cos theta, yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ, sir. And what will be its projection on y-axis? A sin A theta. sin theta. A sin theta. A sin theta. अब मुझे एक बात बताओ, थीटा को क्या लिखोगे रे बच्चों? A sin ओमेगा टी, हाँ सर. हाँ, sir. Yes, sir. आप लोग A cos ओमेगा टी, right? Now, this blue color dot will keep on moving like this. देखो फटाफट बताता जाता हूँ तुम्हें. एक बार यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, right? So it will move in this direction. अरे नहीं, क्या हो रहा है? हाँ, it will keep on moving along this direction, right? यहाँ पे जब आएगा, at this point, it will converge with particle P again. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. यहाँ पे at this location particle P will be at this point. At this location particle P will be here. ठीक है, चलो उसको बना ही लेते हैं. This is particle P, this is particle P. Right. Now for this location of particle P and this location of particle P, we will try to draw it again. Okay. So this point, the particle is moving in the back. वापस वो आ रहा है ना अपने एक्सट्रीम पे. Yes or no? एक बात बताओ, as I said you, as we saw here, right? When the particle is oscillating from its extreme, क्या represent हो रहा है? Cos theta से. Yes or no? So this blue color dot started oscillating from its extreme. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So that is why it is A cos omega t. So whenever, see, if you want to represent this on a circular path, always remember, if the function is given to you as cos function, then see the shadow on x-axis. Got it? Sir. And Yes, if, and if the function is given to you in y-axis, sorry, as a function of sine component, sine omega t, observe the shadow on y-axis. yes, sir. Yes, sir. Understood, all of you? हाँ, Yes. sir. Sir. Yes. Anybody having any doubt? एक No विकेट sir. गया. शिव है, लक्षित भाग गया. चलो जाने दो उसको. अब देखो, एक क्वेश्चन है
x is equal to a sine omega t plus pi by 6. The question asked here is, find the time when the particle becomes or comes to rest for the first and second time. ठीक है. This is the last thing which I am doing. It will take me 2 minutes to do. देखो quickly. Rest का मतलब क्या हुआ? Velocity. श्रेयसी जल्दी से डिफरेंशिएट करते बेटा इसको टाइम के रिस्पेक्ट में. श्रेयसी हाँ सर, डिफरेंशिएशन आता है? भूल गई. ऐसा आता है सर. करो ना जल्दी से. टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका. बहुत तेज भूख सर लगी. dx by dt. हे देवी, भी होता है वो. इसका करो ना डिफरेंशिएशन साइन का. ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6. श्रेयसी जी ये होगा. हाँ सर. साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा. Equated to 0 because the particle wants to come to rest. So it is omega t plus pi by 6 is equal to cos inverse of 0, right? So this is what, when is cos inverse 0? It's n plus 1 by 2 times pi plus pi by 6. Now, for n is equal to 1, the particle will come to rest for the first time. So solve it. Omega t plus pi by 6 is equal to pi by 2. From here we get t as pi by 3 omega. Got it or not? This is the first time when the particle comes to rest. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलो जल्दी सब लोग. हाँ हाँ यार भूख लग रही है. Yes, हाँ sir. सर. हाँ सर. भवानी जी, Sir. Understood. अंडरस्टूड और नॉट? Sir. पक्का झूठ बोल रही हो? तो फोटो दिखा. Sir. तुम कहाँ हो? हाँ यहाँ हो. सर. Good. सर. हाँ कौन सर फिर आया? जानवी. यस सर. हाँ बोलो जानवी बोलो. At n is equal to 1, it would be pi by 2, sir. Shouldn't it be 3 pi by 2? नहीं सॉरी, n is equal to नहीं. 0 0 0. अरे गलती हो गई, गलती. सॉरी. Yes. First value will be at n is equal to 0, na? Time will, first value will be where the time Yes. is negative and least value. Na? अब देखो, for n is equal to 1, for n is equal to 1, this will be omega t plus pi by 6 is equal to 3 by 2 pi. n के बाद 0 के बाद 1 ही आता है ना, तो is equal to 3 by 2 pi minus pi by 6. कितना हो गया ये? 6 में से 1 घटाओ. नहीं 6 क्यों? 9 8 8 pi by 6. pi by 6 or it is 4 pi by 3. So time second instant when the particle comes to rest is 4 pi by 3 omega. Understood? Yes. So we use Yes, trigonometry. sir. Yes, sir. We use trigonometry here to solve this question. All of you understood it? Yes. श्रृंखला Yes. जी आपको कोई दिक्कत है? जानवी, श्रृंखला, जानवी, तरनी, शीर्जा, श्रेयसी, No, sir, no. हमारा, श्लेषण. No, Understood. पढ़ाई करती है कि नहीं? क्लास में इधर उधर करती रहती है. क्या करती है तुम? श्लेषण, तुम पढ़ रही थी कि नहीं? पढ़ रही थी ना सर. हाँ मुझे लगा तुम कुछ और तो नहीं, कहीं और व्यस्त तो नहीं हो. नहीं नहीं. ये ठीक है. अब देखो इसको मैं तुम्हें सर्कुलर मोशन से करके दिखाता हूँ. ठीक है, जल्दी से. व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन इज x is equal to a sin omega t plus pi by 6. Okay, let's do it using circular motion. देखो, first of all, what is this equation representing? Sine, right? So which shadow we will take, on x axis or y axis? Quickly. Y-axis. Y axis. Y axis. बहुत बढ़िया, शाबाश. So our particle is on y axis.
कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, राइट। इसका हमें ओरिजिनल पार्टिकल कहाँ मिलेगा, वी विल फाइंड द ओरिजिनल पार्टिकल हियर, यस और नो। Yes. दिस इज जस्ट अ शैडो, दिस इज जस्ट अ शैडो ऑफ दिस पार्टिकल, राइट। ठीक है। नाउ व्हाट इज द एंगल विच इट इज मेकिंग, पाई बाई 6, this angle is pi by 6. All of you agreed or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is particle P. Now tell me, when this particle Py will come to rest? When will this particle Py come to rest? When it reaches this extreme, yes or no? Sir. Yes, sir. Yes, Sir. sir. So for that, how much triangle here it has to travel? P has to travel pi by 3. अरे P को कितना चलना पड़ेगा? Yes, sir. 5/3. अबे मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, उठा रहा हूँ, तुम जल्दी सवाल का जवाब दो मेरे फटाफट। Understood or not? Pi by 3, yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। तो वी नाउ टेल मी, सुनो ध्यान से, सुनो सुनो, देखो जादू दिखा रहा हूं। फॉर 2 पाई एंगल टू ट्रेवल इट टुक कैपिटल टी टाइम पीरियड, यस और नो, Sir. यस और नो। Yes, sir. To travel pi by 3 angle, how much time it will take? T, which is t upon 2 pi multiplied by pi by 3, yes or no? Yes, Cancel, sir. cancel हो Yes, गया sir. ये। So t, it is what? T upon 6. And what is t? It's 2 pi by omega. So this is pi by 3 omega. Got it? Yes, sir. Yes, sir. हरिणी, जानवी, समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. श्लेषा को समझ आया कि नहीं आया? आया सर. और कल्याण शेट्टी जी, शिव कल्याण शेट्टी जी, आपको समझ में आया है कि नहीं? कहाँ चले गए सर आप? वो सर. हूँ ना तुम? हाँ हाँ, मैं। समझ आ गया सर. चलो अब तुम बताओ शिव, अगली बार ये पी कब रेस्ट पे आएगा? एक मिनट. मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, बताओ जल्दी से। When will this particle P come to rest again? Not P, sorry, not P. This PY, PY. ये PY है बेटा, हाँ। अब ये अभी यहां तक गया था, अब क्या करेगा, यहां से वापस चलेगा, है ना शिव? हाँ सर. कब अगली बार रेस्ट पे आएगा ये? सर 5/6 हो गया. नहीं नहीं बेटा, तुम कैसी बात कर रहे हो यार, आज तुम क्या करके बैठे हो भैया? ये यहां से चलेगा, जब ये यहां पहुंचेगा तो रेस्ट पे आएगा ना, एक्सट्रीम पे। यस. शिव समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? सुनना, बोल नहीं समझ में आ रहा है तो बोल नहीं आ रहा है। ठीक. एक्सट्रीम पार्टिकल रेस्ट पे आता है, ये पता है तेरे? हाँ सर. इस पार्टिकल पी वाई के दो एक्सट्रीम है, एक हाँ. पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में आया? ये हाँ सर, वो समझ में. पॉजिटिव में आएगा, दूसरी बार नेगेटिव में आएगा, आएगा या नहीं? हाँ. हाँ सर. बोलना, ये नीचे आएगा रेस्ट पे। ठीक है. इसमें क्या रॉकेट साइंस है ये? नहीं सर. फिर तू ऐसे करेगा तो कैसे होगा काम मेरा? तो नाउ व्हाट विल हैपन टू पी हियर? P and Py, both of them will coincide, right? Now, how much angle this P has traveled to reach this point? Shiv, bata, how much angle this P has traveled to reach this point? This much angle, yes or no? यस सर. कितना होगा बेटा ये, जल्दी से बता। 4/3. 4 pi by 3, right? So the angle traveled by P to reach this point is 4 pi by 3, right? So again, do the same thing, unitary method. 2 pi angle will be traveled in time t. So 4 pi by 3 will be traveled in how much time? T is equal to t upon 2 pi into 4 pi by 3. So this is 2t by 3. Now what was t? T was 2 pi by omega. So this is 4 pi by 3 omega. I hope all of you understood it. Say yes or no. Understood. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस. Yes. पक्का? हाँ. हाँ, sir.
एक बार पढ़ लो इसको, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, उसके बाद अपन पटाक्षेप करेंगे सभा आज की, खत्म। ये रात भीगी भीगी। नो प्रॉब्लम। चलो बहुत बढ़िया। नाउ ऑल ऑफ यू हैव अ होमवर्क। HC वर्मा, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 Okay, sir. exercises. I'll just show it. Okay, sir. एक मिनट रुको 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 रुको, भागना नहीं, अभी रुक जाओ। ओके, चेक दिस। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। प्लीज रीड द टेक्स्ट बुक। प्लीज रीड द टेक्स्ट बुक। ये सब पढ़ना है तुमको, ये इक्वेशन ये सब पढ़ना है तुमको, ठीक है। ये पूरा पेज कंप्लीट ऑल दिस एवरीथिंग ऑन दिस पेज, कंप्लीट एवरीथिंग ऑन दिस पेज ऑल्सो, प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑल्सो। ओके, सो टिल दिस, ठीक है। 12 पॉइंट बिफोर 12.6 आर्टिकल, सो कंप्लीट आर्टिकल 12.5, रीड इट। शिव, यू विल अपडेट मी अबाउट इट, ठीक है। पढ़ के, तूने पढ़ा नहीं Yes, पढ़ा sir. बताएगा बेटा तू मेरे को। हाँ, sir. अब देखो वर्कड आउट एग्जांपल्स, ऑल ऑफ यू चेक हियर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। Okay, so 4 questions from solved examples. Understood, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, objective 1, question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Till 10, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मत करना, 6, 7, 8, 10, 12, बस। This is in objective 2, except for 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, ठीक है। Yes, sir. यस सर। Till 8, 1 exercises में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ये सब कब तक करके दोगे मुझे? ये सब मुझे चाहिए सैटरडे से पहले, सैटरडे को की क्लास में करके आओगे, समझ आया? एंड Yes, बिलीव मी, इट्स वेरी सिंपल, Yes. इट इज वेरी 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 सिंपल। ठीक है मेरे प्यारे